Hello everyone, welcome back to Your Thoughts Are Valid and I hope you all are doing great. In today's video, we are going to learn about rational emotive behavioral therapy, which we call as REBT. So let's start with the video. So rational emotive behavioral therapy. It is a form of cognitive behavioral therapy only, and it was developed by Albert Ellis in mid 20th century. So according to Ellis, people have both सेल्फ इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, तो उनको खुद की लाइफ में भी बहुत इंटरेस्ट होता है एंड सोशल इंटरेस्ट इज ऑल्सो देयर, जिसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वगैरह आ गई। सो आरईबीटी ऑल्सो अज्यूम कि जो लोग होते हैं वो इनहेरेंटली रैशनल होते हैं और इरैशनल होते हैं, सेंसिबल होते हैं और क्रेजी होते हैं। तो मतलब दोनों साइड होती है एक इंसान की, रैशनल भी, इरैशनल भी, सेंसिबल भी, क्रेजी भी। तो आरईबीटी इज बेस्ड ऑन द प्रिमाइस कि हमारे जो इमोशनल और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज होते हैं वो लार्जली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं हमारे थॉट से, बिलीफ से, इंटरप्रिटेशन से अबाउट इवेंट्स रादर देन द इवेंट्स देमसेल्व्स। ठीक है, मतलब इवेंट उतना अफेक्ट नहीं करता जितना हमारा इमोशनल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स मैटर करता है उन इवेंट्स को लेके। सो ये जो थेरेपी है ये काफी स्ट्रक्चर्ड होती है, गोल ओरिएंटेड होती है। इसका फोकस होता है आइडेंटिफाई करने में और चैलेंज करने में इररेशनल बिलीव्स को, जो कि जिससे इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा है या फिर माल अडेप्टिव बिहेवियर्स हो रहे हैं। व्हाट आर द की कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आरईबीटी? तो एबीसी मॉडल है सबसे पहले। REBT is often represented by ABC मॉडल, जिसमें A स्टैंड करता है एक्टिवेटिंग इवेंट के लिए, B स्टैंड करता है बिलीफ के लिए एंड C स्टैंड करता है कॉन्सिक्वेंस के लिए। एक्टिवेटिंग इवेंट मतलब दिस इज द ऑब्जेक्टिव सिचुएशन और इवेंट दैट ट्रिगर्स एन इमोशनल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स, कि किस चीज से वो ट्रिगर होके इमोशनल या बिहेवियरल रिस्पॉन्स हो रहा है। सपोज किसी को एंजाइटी अटैक पड़ रहा है, क्या सोच के पड़ रहा है कि किस चीज से पढ़ रहा है, जब भी वो सपोज लाइक दे पता चला कि एग्जाम की डेट शीट आ गई, तो उस चीज से उनको एंजाइटी हो रही है, या फिर सपोज कि स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुई, तो दे स्टार्ट स्मोकिंग जैसे ही देखा कि डेट शीट आ गई। सो दैट वुड बी लाइक एक्टिवेटिंग इवेंट। देन व्हाट इज द बिलीफ? बी, तो इट रिप्रेजेंट कि एक इंडिविजुअल का इंटरप्रिटेशन क्या है एक्टिवेटिंग इवेंट का। लाइक इस सिचुएशन में मतलब जो पर्सन है वो ये सोच रहा है कि दे माइट फेल, या फिर एग्जाम्स अच्छे नहीं जाएंगे, या फिर वट एवर एंड ऑल। लाइक इंटरप्रिटेशन बेसिकली नेगेटिव वे में है, इसीलिए एंजाइटी हो रही है, इसीलिए वो माल अडेप्टिव बिहेवियर में इंडल्ज कर रहे हैं। तो एलिस ने आइडेंटिफाई किया कि बिलीफ दो तरीके के होते हैं। इररेशनल बिलीफ क्या होते हैं कि ये अनरियलिस्टिक होते हैं, इररेशनल थॉट्स होते हैं या बिलीफ्स होते हैं जिससे नेगेटिव इमोशंस, जिससे हम नेगेटिव फील करने लगते हैं और अनहेल्पफुल बिहेवियर में इंडल्ज करते हैं। और दूसरे होते हैं रैशनल बिलीव्स, जो कि रियलिस्टिक होते हैं, रैशनल थॉट्स और बिलीव्स दैट लीड टू हेल्दी इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड एडेप्टिव बिहेवियर। तो जैसे कि ये बिलीफ है कि मैं फेल हो जाऊंगी, दैट इज इररेशनल बिकॉज ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। इफ यू विल स्टडी यू विल पास, सो दैट इज इररेशनल बिलीफ। तो बिलीफ इज लाइक, हमने बिलीफ भी समझ लिया। देन सी इज कॉन्सिक्वेंस। सो कॉन्सिक्वेंसेस इज बेसिकली लाइक कि इमोशनल और बिहेवियर रिएक्शन। Consequences are the emotional and behavioral reaction that follow from the beliefs held in response to the activating event. Activating event क्या था? डेट शीट आ गई एग्जाम की। बिलीफ क्या था? कि मैं फेल हो जाऊंगी। तो कॉन्सिक्वेंस क्या निकला? कि एंजाइटी अटैक हो रहा है, जो कि इमोशनल हो गया नेचर में, और बिहेवियरल रिएक्शन इससे लाइक यू आर स्मोकिंग, तो वो हो गया बिहेवियरल रिएक्शन। तो बेसिकली जो भी हम, जैसे भी हमने एक्ट किया एक इवेंट को लेके, दैट वुड बी कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंस। सो कॉन्सिक्वेंस हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल में इट इज अनहेल्दी बिकॉज एंजाइटी हो रही है और स्मोकिंग में इंडल्ज कर रहा है इंसान। देन मूविंग ऑन, इररेशनल बिलीव्स। तो एलिस आइडेंटिफाइड कि बहुत सारे कॉमन इररेशनल बिलीव्स होते हैं जिनको हम मस्टरबेशन बोलते हैं। मतलब लिविंग थिंग्स मस्ट बी अ सर्टेन वे, कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं आई एम अ फेलियर, लाइक दैट। देन देयर इज दिस ऑफ लिविंग, विच मीन्स कि ये बिलीव करना कि इवेंट्स जो होते हैं वो अनबियरेबल होते हैं या कैटास्ट्रोफिक होते हैं, जैसे ब्रेकअप, तो इट इज ऑफुल।
ठीक है, कि नहीं झेल सकती मैं, इट इज अनबियरेबल। ये सारे इरेशनल बिलीफ्स होते हैं। देन लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, बिलीव करना कि वन कैन नॉट टॉलरेट डिस्कम्फर्ट या फ्रस्ट्रेशन की, चोट लग गई थोड़ी सी, तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि मैं नहीं कर सकती, मैं ये पेन नहीं झेल सकती, दैट इज इरेशनल बिलीफ। देन डिस्प्यूटिंग इरेशनल बिलीफ, आरईबीटी में जो थेरेपिस्ट होता है वो हेल्प करता है क्लाइंट को कि वो अपने इररेशनल बिलीफ्स को चैलेंज करें बहुत सारी टेक्निक्स यूज करके। जैसे कि वो पूछेंगे कि एविडेंस दो, इफ यू थिंक दिस गिव मी एविडेंस, कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम फेल हो गए। ठीक है, तो बेसिकली इररेशनल बिलीफ्स को काउंटर करना, क्वेश्चन करना कि नेसेसिटी क्या है इन बिलीफ्स की, या इनकरेज करना क्लाइंट्स को कि वो रैशनल बिलीफ्स ज्यादा अडॉप्ट करें। देन एफिकेसी ऑफ रैशनल बिलीफ्स, तो आरईबीटी emphasize the importance of adopting rational beliefs that lead to healthier emotional response and more adaptive behavior, and this shift in thinking is seen as a key factor in emotional well-being. Then, what are the origins of emotional disturbance? So, REBT suggests that because irrational thinking is so widespread, people must have a strong biological tendency to think dysfunctionally and believe that life should go their way. Childhood difficulties and trauma may contribute to a person's tendency to think and act in unhealthy ways. Emotional disturbance then results from a combination of an innate predisposition toward irrational thinking and life experiences. People have within themselves the means to control their thoughts, feelings, and actions, but they must first realize what they are telling themselves to gain command of their lives. Furthermore, Ellis believes it is a mistake for people to evaluate or rate themselves beyond the idea that everyone is a fallible human being. Then, self acceptance. It suggests that emotional difficulties are often found in people with conditional self acceptance. ठीक है, दे वैल्यू themselves तभी जब उनको लगता है कि अगर मैं ये अचीव करूंगा मैं तभी एक अच्छा इंसान हूँ, rather than because of their basic worth as a person. So when they experience failure or disappointments, they tend to rate themselves harshly and their self-esteem decline as a result. Then focus on present thoughts. So REBT focus on present thoughts rather than past events and believe that people's current thoughts and behaviors maintain their self-defeating thoughts. Clinicians use forceful and creative strategies to help people identify and dispute their irrational beliefs. REBT asserts that positive results are obtained when people gain awareness of their irrational beliefs and take effective action to change them. व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलर इन आरईबीटी? सो उनका रोल काफी एक्टिव होता है और दे आर वेरी डायरेक्ट. दे आर लाइक इंस्ट्रक्टर्स हु टीच एंड करेक्ट द क्लाइंट्स cognitions. Counselors must listen carefully for illogical or faulty statements from their client and challenge beliefs. REBT counselor need to bright, knowledgeable. Counselors need to be bright, knowledgeable, empathetic, respectful, genuine, concrete, persistent, scientific, etc. Then, what are the goals of REBT? First one is emotional regulation. So, it helps individuals regulate their emotions effectively by challenging irrational beliefs that contribute to emotional distress. Then, second is behavioral change. It helps individuals modify maladaptive behavior and replace them with more adaptive responses based on rational thinking. Then cognitive restructuring. So REBT seeks to restructure and replace irrational beliefs with rational beliefs, fostering more constructive and balanced thinking pattern. Then self-acceptance. It encourages individuals to accept themselves, including their imperfections, without judgment or self-condemnation. And it also focuses on helping individuals in setting clear and realistic goals for themselves and their lives. What are the techniques used in REBT? First one is cognitive disputation. So the therapist help clients dispute and challenge their irrational beliefs by questioning the evidence, logic, and necessity of those beliefs. Suppose किसी ने बोला कि I will fail, तो the therapist will ask, why will you fail? Give me the evidence. Why do you think you will fail? तो मतलब basically उनके irrational beliefs को challenge करना.
Then homework assignments. So clients are usually often given homework assignments to practice identifying and disputing irrational beliefs. Usually it includes, journaling and all. Then role playing, it is used to simulate situations in which clients can practice and develop more adaptive responses to challenging scenarios. Suppose they are, like saying कि मुझे डर लग रहा है टीचर से बात करने में, but I need to talk to the teacher. तो उस टाइम पे therapist and client can indulge in role playing where therapist will act like the teacher. So that will happen. Then use of rational emotive imagery. This technique helps individuals visualize and emotionally rehearse more rational and constructive responses to activating events. ठीक है, बेसिकली विजुअलाइज करना और इमोशनली रिहर्स करना रैशनल और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सेज टू द इवेंट्स विच कॉज एंजाइटी या फिर विच क्लाइंट कंसीडर्स एज थ्रेटनिंग. Then there is ABCDE model. So this is like extension of ABC model only, where D is for disputation, where we are disputing the irrational beliefs, and new effect to emphasize the process of challenging irrational beliefs and achieving a new healthier emotional outcome. ठीक है कि new effect क्या हुआ उसका. So E is for effect, D is for disputation. Then the 3 minute technique. It involves monitoring and disputing irrational thoughts as soon as they arise, aiming to disrupt negative patterns in real time. ठीक है, जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जैसे ही इरेशनल थॉट्स आ रहे हैं, वैसे ही उनको क्वेश्चन करने लगना, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को डिसरप्ट करना जैसे ही वो आ रहे हैं. देन शेम अटैकिंग एक्सरसाइजेस. तो दीज एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व encouraging clients to deliberately engage in situations that may trigger feelings of shame or embarrassment, challenging their irrational beliefs about such emotions. ठीक है, so ये सब हो गया. These are the techniques. Then what are the applications? So REBT has been widely applied in treatment of various psychological and emotional issues like anxiety, depression, anger management, etc. Then it is a cognitive behavioral therapy which focuses on helping individuals change their emotional and behavioral responses by challenging irrational beliefs. It is structured, goal-oriented, and designed to foster more rational thinking and healthier emotional reactions. And it is applicable to a wide range of psychological issues and is well supported by empirical evidence. Then, how does it view emotional disturbance? People learn irrational beliefs from significant others during childhood and then recreate these irrational beliefs throughout lifetime. People actively reinforce their self defeating belief through the process of auto-suggestions and repetitions and then start behaving with irrational beliefs consistently and develop dysfunctional attitude asserted that blame can be at core of many emotional disturbance. If we want to become psychologically healthy, we have to stop blaming ourselves and others. What is the view of human nature as per REBT? Ellis believed that people have both self-interest and social interest, and people are inherently rational as well as irrational. Then REBT proposes four core irrational beliefs, demands the tendency to demand success, fair treatment, and respect. This is basically masturbation. I must be treated fairly, and all the must we use. Then awfulizing. This is the tendency to consider adverse events as awful or terrible. It's awful when I'm disrespected. Then low frustration tolerance, LFT, the belief that one could not stand or tolerate adversity. I cannot stand being treated unfairly. Then depreciation, the belief that one event reflects the person as a whole. For example, when I fail, it shows that I'm a complete failure. Okay, so these are four core irrational beliefs. There are many others, but these are the four irrational beliefs. Then, what are some of the strengths of REBT? So, the first one is that it has a strong empirical foundation. Like research say find out किया गया है कि it's like very effective. Then second is focus on rational thinking. So it identify and challenge irrational beliefs and thought patterns. Ye cognitive restructuring can lead to significant and lasting improvement in emotional well-being. Then RGBT is a highly structured and goal-oriented therapy. It involves setting specific measurable goals and systematically working to achieve them. This can be motivating and effective in addressing specific issues. Then
REBT can be adapted for use with diverse populations like children, adolescent, adults. Then self-help potential clients can learn the skills and techniques of REBT, making it a valuable tool for self-help and relapse prevention. Then emphasis on responsibility. So it encourages clients to take responsibility for their beliefs, emotions, and behavior, and thus empowers them to make constructive changes in their lives. So these are certain strengths. Then limitations. So it has limited focus, which means it does not delve deeply into unresolved emotional or past trauma issues. And there is overemphasis on rationality, which may not be suitable for individuals who prefer a more emotion focused approach or who are comfortable with their belief system. Then overlooking of environmental factors on an individual psychological well-being. Then there is the success of REBT often depends on clients' willingness to complete homework assignments and engage in self-monitoring. Then it is brief, solution-focused nature uh, may not be appropriate for clients with complex, long-standing, or deeply rooted psychological issues, and it is ineffective for certain conditions like personality disorders, and possible negative outcomes might be there, like in some cases, if REBT is not conducted with sensitivity, it may lead to increased self-blame or distress. So these were the limitations, and that was it for REBT. REBT is very important. So please do remember all the techniques and irrational belief, core irrational beliefs. So that was it for today's video. If you have any doubt, please do ask in the comment section. And thank you so much for watching this video.